Dear students, in last lecture we have studied about the partial wave analysis, in which we have find out the scattering amplitude for the nth partial wave, that was f theta phi equal to 1 upon k summation L equal to 0 to infinite 2L plus 1 PL cos theta exponential I delta L sine of delta L, and after that we found out the total scattering cross section sigma t equal to 4 pi over k square summation L equal to 0 to infinite 2L plus 1 sine square delta L. In today's lecture we will discuss one of the important theorem, that is optical theorem. According to this theorem, total scattering cross section psi t is equal to the 4 pi over k times the imaginary part of the scattering amplitude in the forward direction theta equal to 0. It means optical theorem stated that sigma t equal to 4 pi over k imaginary part of f theta phi. In this picture, this is incident wave and this is your target. After getting scattering from this target, this incident wave spreaded in all directions, and this is the wave in theta equal to 0 direction or forward direction. So the amplitude in this direction, in forward direction, that is f theta equal to 0. We can interpret it, the optical theorem, as when scattering occurs, then some part of the energy is carried by the incoming wave and radiated in all directions. This part of the energy must be removed from the incident wave. It means जब भी कोई स्कैटरिंग प्राप्त होती है तो उस स्कैटरिंग में इनकमिंग वेव की जो एनर्जी है वो सभी डायरेक्शन में रेडिएट हो जाती है, और दिस एनर्जी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द इंसिडेंट वेव आफ्टर स्कैटरिंग. जो स्कैटर्ड वेव मिल रही है उसकी जो एनर्जी है वो इंसिडेंट वेव की एनर्जी से कम होगी, इसलिए द एनर्जी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द इंसिडेंट वेव. Consequently, energy flowing in forward direction is reduced, and this modified the scattering amplitude in the direction theta equal to 0. इस प्रकार थीटा इक्वल टू 0 डायरेक्शन में जो एनर्जी है वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है. स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इस एनर्जी के रिड्यूस होने की वजह से मॉडिफाई हो जाता है. इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम पार्शियल वेव एनालिसिस में जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन प्राप्त हुआ था उसका यूज करते हैं. दैट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वाज सिग्मा टी इक्वल टू 4 पाई ओवर के स्क्वायर समेशन एल इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट 2L plus 1 sin square delta L. This is equation number 1. And we already know, we have already calculated the scattering amplitude in the partial wave analysis method, that was equal to f theta phi equal to summation L equal to 0 to infinite 2L plus 1 over k exponential I delta L sin delta L PL cos theta. This is equation number 2. So the scattering amplitude in forward direction means theta equal to 0 direction. We have to put theta equal to 0 in equation number 2. Then f theta equal to 0 equal to summation L equal to 0 to infinite 2L plus 1 exponential I delta L sine of delta L PL cos of 0. And from the property of Legendre polynomial, PL cos of 0 equal to PL of 1 and PL1
this is equal to 1. Hence f theta equal to 0 is equal to summation L equal to 0 to infinite 2L plus 1 over k exponential I डेल्टा L साइन ऑफ डेल्टा L। इस तरह से हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इतना प्राप्त होता है। और हम इसका इस इक्वेशन का इमेजिनरी पार्ट लें तो एक्सपोनेंशियल आई डेल्टा एल को अपन को लिखना होगा कॉस ऑफ डेल्टा एल प्लस आई साइन ऑफ डेल्टा एल, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो साइन ऑफ डेल्टा एल के साथ होगा। इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन विल बिकम imaginary f theta equal to 0, this is equal to summation L equal to 0 to infinite 2L plus 1 over k sin square delta L. We have used here exponential I delta L equal to cos of delta L plus I sin of delta L. Now if we multiply this equation by 4k, then we have 4k over 4 pi over k, then we have 4 pi over k imaginary part of f theta equal to 0, then 4 pi over k square summation L equal to 0 to infinite 2L plus 1 sin square delta L. If we compare this equation by equation number 1, then this is nothing what it is equal to the total scattering cross section. It means total scattering cross section, this is equal to 4 pi over k imaginary part of f theta equal to 0. So in this way we can prove the optical theorem. The notes related to this theorem I have already delivered to you on the WhatsApp group. तो नोट्स को आप एक बार देख लें, कैलकुलेशन को कर लें, ये ऑप्टिकल थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। थैंक यू।